Okay, today we will start the topic polynomial. First, I will explain what the polynomial is, then the long division, the concept of the polynomial, then we have the synthetic division. Suppose we have this one, according to the definition of the polynomials, a mathematical expression with all non-negative, non-fractional exponents. So first of all, I have to explain what's the meaning of this definition. The first example is, suppose we have this one is 3x square minus 10 over x plus 5. The first expression is. The second one is, suppose we have then the 4x cube minus 2x square plus under root x minus 10. And the third one is x square minus 4x plus 5. The fourth one is x cube minus 10x square plus 20x plus 13. I will just explain the exponents. Exponent means in the first example, the first exponent is 2, the second exponent is minus 1, the third exponent is 0. Because the constant means whenever we have the any constant terms, we have to write this term as x raised to power 0. So the constant terms, the exponent in algebraic expressions is 0. In second example, we have the exponent. This one, the first exponent is 3. The second exponent is 2. The third exponent is 1 by 2 and 0. In third example, we have the first exponent is 2. The second and 1 and then we have 0. Last example is 3, 2, 1, 0. Now, in this whole question, in this whole examples, you have to observe which expressions involving non-negative, non-fractional exponent. So in first example, we have the one negative exponent. So this is the algebraic expression, but this is not a polynomial. In second example, we have a one fractional exponent. So this is an algebraic expression, but this is not a polynomial. So the third one is all the exponents are non-fractional and non-negative. So this example is an example of polynomial. And the fourth example is all the exponents are non-negative, non-fractional. So these two examples are of polynomials. Now, the highest exponent of a polynomial, highest exponent of polynomial is called its degree. The highest exponent of polynomial is called its degree, is called its degree. Okay, in the first two examples, these two examples are not polynomials, so the degree will not exist for the first and second term, first and second examples. But in third and fourth example, the highest exponent is so that its degree will be 2. And in fourth example, the highest exponent is 3, so its degree will be 3. Sir, can you repeat further? Okay, degree means the highest exponent of a polynomial. In first and second example, these two examples are not polynomials. This example and this example, these two examples are not polynomial. If I ask what's the degree of this polynomial, the third one, what's the degree of this polynomial, so you will observe which the highest power of variable, highest power. So the highest power is 2. So its degree of this polynomial will be 2. Similarly, in fourth example, the highest exponent is 3.
So the degree of this polynomial is 3. Is it clear, beta? Yes, sir. Now we have very first example, first concept, that is called division of polynomials. Division of polynomials. So basic knowledge, just 2 minutes, I will explain what's the basic knowledge for this concept. We know that whenever we are dividing one number by the second number, suppose that the number is 13 divided by 5. So in the process of division, the first number, that number is called dividend. जिसको divide किया जा रहा है, that is called dividend. And the second number जिससे divide किया जा रहा है, that is called divisor. This process you already are very much familiar in the class 3, 4, 5. So this 13 is divided by 5. So you will start from here. 5, how many 5 becomes 13 or less than 13? So you will write over here 5 twos are 10. And then you have to subtract. And how you will subtract? You will change the sign of the second term. So you will get the answer 3. So this expression is called quotient. This expression left at the end of the long division, this is called remainder. So there is always an equation revolving these four uh, expressions. So dividend always equal to quotient time, that is for times divisor plus remainder. That equation or that identity is applicable for every process of division. For every process of division. So suppose the dividend is over here is 13. The dividend is 13 over here. Then we have the sign of equality. Quotient is 2 over here. Divisor is 5 over here. Remainder is 3 over here. If you calculate, you will get the 13 is equal to 13. So whenever there is a long division process, whenever there is a dividend, whenever there is a divisor, so that identity or that equation will be applicable. इसको बेटा याद रखना है. ये तो मैंने अभी बेसिक नॉलेज बताई है आपको. Now डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स. अभी तो बेसिक डिजिट्स की डिवीजन थी. अब जरा हम डिस्कस करते हैं व्हाट्स द डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स. So before starting division of polynomials, you must familiar these 3, 4 steps. तो जरा स्टेप्स लिख लूं, फिर उसके बाद मैं डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स को एक्सप्लेन करता हूं. ये जो मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड. There are 3, 4 steps. The first step is write dividend and divisor within sign of division into descending order. Into descending order. Take first term of dividend
and divide by first term of divisor to get first term of quotient. Multiply quotient by divisor and write like terms under the like terms and subtract. Repeat the steps. So beta, you have to follow these four steps. You have to follow these four steps. So question will be just like this one. Find remainder and quotient when 3x raised to power 4 minus 10x square plus x cube plus 13x is divided by 1 plus x square minus 3x. After writing the steps, after writing the steps, now we will solve one question according to these steps. And you have to listen very carefully. And this one, this sign is called sign of division. This sign is called sign of division. First of all, you have to write the dividend. Dividend means जिसको divide करना है. So that term is called dividend. You have to write in descending order. 3x raised to power 4 plus x cube minus 10x square and plus 13x. Remember that you have to write according to the descending order. Descending order means first of all you have to write the highest exponent, then the smaller one, and at the end you have to write the constant terms or the smallest exponent. Similarly, you have to follow the same rule for this expression, divisors. So first of all you have to write x square, then you have to write minus 3x, then you will write plus 1. So the first step I solved, I write the expression according to the first step. The first step is okay. Now what's the second step? Second step is take first term of dividend, first term of divisor and divide. So I will take this first term 3x raised to power 4 divided by the first term divided by x square. And you know that after cancellation you will get the 3x square. So 3x square will be the first term of the quotient. How you will get it? You will take the first term over here. You will take the first term of this one. You will take the first term of this one and divide. After division, you will get the answer. That answer you have to put in the place of quotient. Now, what will you do? You will multiply by 3x square by the whole divisor. Multiply 3x square by whole divisor. So x square minus 3x plus 1, that is the divisor,
and that's the quotient. Multiply. When you multiply, the powers of variable will be added. You will get the 3x raised to power 4 minus 9x raised to power 3 and plus 3x square. Is it clear, beta? Check it. There is no mistake. 3x square multiplied by x square, you will get the 3x raised to power 4. 3x square multiplied by minus 3x, you will get the minus 9x cube. And 3x square multiplied by 1, you will get the 3x square. So you will get, you have to write like terms under the like terms. What's the meaning of this one? x4 के नीचे आपने x4 वाली terms लिखनी है, x cube के नीचे आपने x cube वाली terms लिखनी है, और x square के नीचे आपने x square वाली terms लिखनी है. Change the sign of second term. That sign is plus, it becomes minus. That sign is minus, it becomes plus. That sign is plus, it becomes minus. Remember that the first term will always cancel out. Plus 3x raised to power 4 will cancel out with the minus 3x raised to power 4. Plus x cube plus 9x cube, it becomes 10x cube. Minus and minus becomes 13x squared plus 13x, if I'm not wrong. Again, you have to repeat the step. Take the first term. What's the first term of this one is 10x cube. The first term is 10x cube. So 10x cube you have to write over here divided by the first term x square of this divisor, because now the second, this expression becomes the dividend and the second is terms that becomes the divisor. So you will get the 10x. After simplification, you will get the 10x. So you have to write plus 10x. Now you have to multiply this 10x with the whole divisor. You have to multiply 10x with the whole divisor. So 10x multiplied by x squared, it becomes the 10x cube. 10x multiplied by minus 3x, it becomes the minus 30x squared. And 10x multiplied by 1 becomes 10x. Again, change the sign because you are repeating the steps. Again, change the sign. That is plus 10, it becomes a minus 10. That is minus 30, it becomes a plus 30 and minus 10. First term always will be cancelled out. Plus 10x cube and minus 10x cube will be cancelled out. What's the answer of minus 13x square? You have to consider the new sign plus 30x. So 30 minus 13 will get the 17x square, and plus 13x minus 10x, you will get the plus 3x. Now it's very simple. 17x square divided by x square, you will get only 17 plus 17. So 17 multiplied by this one, you will get the 17x square. 17 multiplied by this one minus 51x, and 17 multiplied by 1 becomes plus 17. So the sign is opposite. 17 having the plus sign, it becomes the minus. It becomes plus, it becomes minus. First term will be cancelled out. So you will get the 49x minus 17. If I am not wrong, plus minus mistake, you have to check very carefully. So this expression at the top of the sign of division, that expression is called quotient. So what's the quotient of the question is 3x squared plus 10x plus 17. And this expression at the end, that is called remainder. सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने डिवीजन स्टॉप करनी है? Yes. When the power of remainder, the power of x, the power of the variable is less than the power of divisors. यहाँ पर देखें इसकी पावर कितनी है 2 है और यहाँ पर पावर कितनी है 1 है. जब आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है इसकी पावर इससे लेस हो जाएगी, 1 लेस है इस 2 से, तो यू हैव टू स्टॉप द क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू इट.
This method is applicable for every type of the divisor and for every type of the dividend. बेटा ये नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, अब जरा एक क्वेश्चन मैं जरा जल्दी से एक और सॉल्व करूंगा, फिर दोनों का जरा फर्क सम एक्सप्लेन करूंगा. फाइंड रिमाइंडर and quotient when 3x cube minus 10x square plus 5x minus 2 is divided by x plus 3. इसको अगर मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा ताकि फिर आपको सेकंड मेथड एक्सप्लेन कर सकूं. टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास आज. 3x cube minus 10x square plus 5x minus 2 and you have to divide by x plus 3. I will make it short. शॉर्ट इसलिए करूंगा कि जरा थोड़ा सा सेकंड टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन करना है. 3x क्यूब को जब मैं इस x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x क्यूब आएगा और प्लस 9x क्यूब आ जाएगा. सॉरी 9x स्क्वायर आएगा. That sign is minus, that is minus. The first term will cancel out. Minus 19x square plus 5x minus 2. Minus 19x. So minus 19x square minus 57x. That is plus, that cancel out. I will get the 63x. 62x minus 2 plus 62, it becomes 62x plus 3 2s are 6 and 3 6 are 18. That's a minus, that's a minus. So you will get the minus 188. बेटा चेक कर लेना कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो. All type of the questions of the factors, all type of the questions of the divisors, all type of the questions quotient you can solve with the long division method. But there is another method. That method is called synthetic division. It is also the method to find the remainder and quotient. It is also a method. The first method is called the long division method. But the long division method you can apply for every type of the question. That's why I force on this method, long division method. It is applicable. It is applicable when divisor is linear. ये इसकी बेटा कंडीशन है कि डिवाइजर अगर लीनियर होगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. व्हेन डिवाइजर इज लीनियर और एनी डिवाइजर which can be factorized as linear factors. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. या तो डिवाइजर लीनियर होना चाहिए और अगर डिवाइजर लीनियर नहीं है तो फिर अगर वो फैक्टराइज हो सकता है तब ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा. बेटा सेम क्वेश्चन मैं लॉन्ग डिवीजन से सिंथेटिक डिवीजन से करता हूँ.
जरा कंसेप्ट जरा समझने हैं, इसको मैं स्टेप्स लिख नहीं रहा, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। सेम क्वेश्चन है, 3x³ है -10x² है प्लस 5x है -2 है डिवाइडेड बाय x+3 है। Now listen very carefully. First of all, you have to write the quotient of divisor. आपने एक कॉलम बनाना है, एक रो बनानी है, ये आपके पास कॉलम है और एक ये रो है। First of all, you have to write the coefficients of dividend. पहला coefficient क्या है? That is 3. You have to put 3 over here. Then you have to put -10 over here. Then you have to put 5 over here. Then you have to put -2 over here. और अगर कोई टर्म्स गायब है, जैसे सपोज करें आपके पास x² वाली टर्म्स नहीं है, देन यू हैव टू पुट 0 कोएफिशिएंट। अपने माइंड में डिवाइजर को इक्वल टू 0 करें और x की वैल्यूज निकाल के यहां पुट कर दें। आप अपने माइंड में आपने x की वैल्यूज को 0 पुट कर देना है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यूज निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी यू हैव टू पुट ओवर हियर। फर्स्ट प्लेस पे हमेशा 0 पुट करना है, फर्स्ट प्लेस पे हमेशा 0 पुट करना है आपने। एंड ऐड दीज टू नंबर्स, 3 + 0 बिकम्स 3। पहला स्टेप क्या करना है कि यू हैव टू राइट ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड। दूसरा स्टेप क्या करना है, यू हैव टू पुट डिवाइजर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पुट ओवर हियर, जहां पर मैंने सर्कल डाला हुआ है। तीसरा स्टेप क्या करना है कि पहले कॉलम में हमेशा आपने 0 पुट करना है और आपने ऐड कर देना है। देन मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, जो आंसर आया कॉलम का इसको मल्टीप्लाई करना है। व्हाट्स द आंसर इज -9 एंड पुट ओवर हियर। Add again, you have to add, that method is also called add and multiply. Add the column and multiply with this number, so you will get the 19. अब ये जो आंसर आया है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट कॉलम में। तो क्या आंसर आया, -19 - 3, it becomes 57. Again add, it becomes 62. अब फिर दोबारा जो आंसर आया ये वाला, इसको फिर यहां पे आके मल्टीप्लाई करें, it becomes माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 × 2 = 6 आ जाएगा और 6 × 3 = 18 आ जाएगा, -188। आगे तो सारे कॉलम ही खत्म हो गए। अब इसका आंसर बड़े ध्यान से लिखना है आपने, बड़े ध्यान से। this last number that will be remainder, this last number that will be remainder, and this 3 - 19 and 62 that becomes the quotient. थोड़ा सा स्पेस रख के लिखना है आपने, स्पेस रखनी है आपने। द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिविडेंड इज 3। इससे एक लेस से स्टार्ट करना है, इससे लेस अगर 3 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, x² x और +0, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन का रूल ये है कि आपके पास या तो डिवाइजर लीनियर होना चाहिए या फिर डिवाइजर लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। सर तो जैसे अगर हमारा डिवाइजर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर हम उसको फैक्टराइज करके सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ अगर आप जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट एग्जांपल में, ये जो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है लॉन्ग डिवीजन की, इसमें आपके पास ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आप सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? आप सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये फैक्टराइज हो सकता तो फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। अच्छा, इसकी फिर एप्लीकेशन, सर हम दो रूट्स हम यूज़ करते हैं, मतलब पहले हम एक रूट के साथ डिवाइड करते फिर हम दूसरे के साथ करते। बिल्कुल ऐसे ही होना था। सपोज वी हैव दिस वन इज द x रेज टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपके पास ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास x प्लस 2 बनेगा और x प्लस 1 बनेगा। तो आप यहां से x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1 दो तरफ से फिर सॉल्व करेंगे। यानी पहला आपने बनाना है, कोफिशिएंट्स 4 बनेगा, फिर -10 बनेगा, जी एक्स के तो है नहीं, 0 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। तो पहले स्टेप में आपने -2 पुट कर देना है, ये 0 होगा, दैट बिकम्स 4, ये -8 हो जाएगा, दैट बिकम्स सर माइनस, ये 1 होगा, 4 नहीं 1। ये 1 कैसे? अच्छा ठीक है जी, ये 1 होगा। ठीक है, तो देन यू हैव टू अप्लाई टू मेथड्स। ये 1 है, यहाँ पर भी आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी टर्म्स चेंज होगी। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि फिर आपने दूसरा ऐसे ही दो बनाने होंगे। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपके पास -12 आ जाएगा, -24 हो जाएगा, ये -24 आएगा, ये +48 होगा, ये 53 आएगा, और माइनस जब सॉल्व करेंगे तो 6 है, तो ये 103 आएगा। अब ये जो दूसरे वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, पहला 0 करेंगे, ये 1 आएगा, -1 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, इसकी एप्लीकेशन कल करेंगे, बिकॉज आई हैव अ क्लास एट 11:20। उस क्लास के बाद फिर मेरे बस 3 o'clock तक टाइम होगा, तो मैं कल इसी टाइम पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। ओके बेटा? ओके सर, सर बस एक चीज़ पूछिए। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो आंसर आते हैं क्वेश्चन वाला, इसको हम ग्रेडियंट के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कब हम करते हैं यूज़? वो कल एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन है, वो डिस्कस करेंगे, फिर सारी बात समझ आ जाएगी। ओके बेटा, थैंक ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।